Such a pleasure to meet all of you, the youth of this country, and try to interact with all of you on a topic which is dear to all of us. It's a privilege for me to be the speaker of Shri B.G. Deshmukh Memorial Lecture series. From what I know about Mr. Deshmukh, he was a true patriot, and he was a very efficient civil servant. On this occasion, I pay my respect to Shri Hasmukh, this great soul. Also, I take this opportunity to offer my deepest condolences to the Karar family for losing one of their beloved members of the family. I pray to God that may her soul rest in peace. I have prepared a very formal speech for this program, but don't worry, I'm not going to read it out. I'll give it for record of the trust and MIT so that they can keep it on record that this was the memorial lecture delivered. But I will talk about some of the salient points out of this. The first thing we have to know is that good governance is a mirage chased by all governments of the world. It's a mirage. Good governance. Right from the time a democracy was installed, or right from the time even before that, the bureaucratic reforms, the civil service reforms, and the good governance are talked about. We can divide this talk into 4 parts. First of all, before I start, let me tell you, I'm going to talk about good governance only in the context of civil service reform, the bureaucratic reforms. The good governance has got many aspects, which includes good political governance also, which includes good economic governance also. But I'm not going to touch upon those aspects. I'm going to limit it to the bureaucratic reforms or the civil service reforms. That's the first point. As I told you, we can divide this topic into 4 parts. The first part, what is the present status of bureaucracy? That's the first part. The second part is that what is the definition of a good governance in the context of bureaucratic reforms? That's the second part. The third part is what are the challenges? Why we are not able to achieve it? There are a lot of challenges, and we have to understand what are the challenges. And the fourth is, what are my suggestions for it? What can we do to bring about good governance? So I'm going to cover this topic into 4 parts. Let me start with the first point. What is the present status of bureaucracy? Now I'm going to read out a statement of Mr. Jimmy Carter, and that describes the state of bureaucracy of USA. I'm not going to even talk about India. I'm going to talk about USA. So every government in the world has tried civil service reform. The USA also tried it. In 1978, the United States of America passed a law. It is called Civil Services Reform Act of 1978. At that time, Mr. Jimmy Carter was the president. And while introducing this act to the parliament, what did he say?
to the Congress, what did he say? He says, I will quote Mr. Jimmy Carter. He said that the federal personnel system in the USA had become a bureaucratic maze, M-A-Z-E, maze, which neglects merit, tolerates poor performance, and permits abuse of legitimate employee rights, and mires every personnel action into red tape, delay, and confusion. These are the words of Mr. Jimmy Carter in the context of United States bureaucracy. So please understand that bureaucracy is bureaucracy everywhere. Kaua sab jagah kale hote hai. So we have to accept the fact that India is not unique. The bureaucracy is bureaucracy everywhere. But why is bureaucracy what it is? We have to see that also. There are reasons for bureaucracy forming a particular set of values. Why is it so? What does it come out of? We will talk about it. If we talk about what is good governance, now as I told you, good governance has got many aspects, but I'm going to limit it to civil service reform. So I'm going to define good governance as the fundamental transformation of public systems and organizations to create dramatic increase in their effectiveness, efficiency, adaptability, and capacity to innovate. This is the definition of good governance. It is achieved, the good governance is achieved. When is it achieved? When the processes and the institutions produce results that meet the needs of the society. The processes and the results of the governance should meet the needs of the society while making the best use of resources at their disposal. And it also covers the sustainable use of natural resources and the protection of environment. So this is what is the definition of good governance. What are the challenges of good governance? The first and foremost is that many government organizations, they have got confusing, conflicting objectives. The same government organization is expected to deliver regional balance. It is also expected to deliver higher per capita income. It is also supposed to promote investment. So there are a lot of conflicting goals in many organizations. Some of them don't have goals also. They are so confused, they don't have any specific objectives also. They don't have clear-cut bottom lines also, that okay, we have to achieve this much. Very few of the government organizations measure their performance also in terms of objective criteria. And सबसे बड़ी जो दिक्कत है, most organizations are not accountable to the citizens or their stakeholders, the customers. They don't even know who our customers are. So that's the problem, that's the first challenge. The second challenge is lack of motivation among the government employees. गवर्नमेंट में एक कहावत है कि जो काम करते हैं, जो काम नहीं करते उनको प्रमोशन मिलता है और जो काम करते हैं उनको चार्जशीट मिलती है. काम नहीं करते उनको प्रमोशन मिलता रहता है और जो काम करते हैं उनको क्या मिलता है? चार्जशीट. चार्जशीट मीन्स डिसिप्लिनरी एक्शन. There is no cost involved in not taking a decision. But if you take a decision and if you perform, there are chances that you might be given a charge sheet. There are chances you may have to face the public criticism. These are all there. That's part of the government culture. And that's why, over a period, people think कि सरकार में दूर रहना अच्छा है, जितना हो सके उतना करो काम, बाकी छोड़ दो. This is the main problem. And we need to create a culture of taking responsibility, entrepreneurship, innovation in the government. बहुत कम रिवॉर्ड होते हैं और वो भी कुछ लोगों को मिलते हैं अच्छा काम करने के लिए.
बट कितने आईएएस ऑफिसर्स है कि जो एनोनिमसली बिहाइंड द कर्टन अच्छा काम करते हैं, उनको तो रिकॉग्निशन भी नहीं मिली. सो वी हैव टू सी दिस. The risk of failure is too high compared to the rewards of performance. And that's the part of organization culture. We also have more emphasis on procedures. And sometimes an act of procedural omission or commission also becomes more serious in government compared to सीरियस मिस इंटेंशंस. अगर कोई करप्शन कर रहा है और उनको चार्जशीट मिले तो कोई बात नहीं है, बट छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोगों को डिसिप्लिनरी एक्शन में घसीटा जाता है और उसके कारण ही थोड़ा लोग लैक ऑफ मोटिवेशन हो गया है सरकार में. एज आई टोल्ड यू, वेरी फ्यू गवर्नमेंट्स हैव गॉट क्लियर कट गोल्स, और वो भी क्या है नीचे वाले को तो पता ही नहीं है. ऊपर के अधिकारी जो है जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करने की कोशिश कर रही है, लेकिन नीचे वाले एम्प्लॉय को आप पूछेंगे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है तो उनको शायद ही कुछ पता है. एंड दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज देन देर इज नो मोटिवेशन. इफ ए पर्सन इन ए डिपार्टमेंट, ए क्लार्क, knows that what I am going to do is making a difference to the people of the country, then they would be better motivated. लेकिन ये बताया नहीं जाता उनको. वो अपना काम करते रहते हैं, बड़े ऑफिसर्स को उनके लिए कुछ टाइम नहीं है कम्युनिकेट करने का, और चलता रहता है. वन मोर प्रॉब्लम इज देयर इज अ सीरियस लैक ऑफ ट्रेनिंग. लोग समझ रहे हैं कि ट्रेनिंग तो बहुत दी जाती है. मेरे कलीग संजीव जो है वो LBS नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टर थे. आईएएस ऑफिसर्स को तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है. ही इज़ वन ऑफ द डिस्टिंग्विश सर्विस कलीग ऑफ माइन. संजीव हैज डन अ लॉट ऑफ गुड वर्क इन हिज ओन स्टेट कार्डर एंड ऑल्सो इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ही इज़ ए थिंकर, ए डायनेमिक ऑफिसर, एंड आई एम वेरी प्राउड टू शेयर ए स्टेज विथ हिम. संजीव, तो वहाँ तो आईएएस ऑफिसर्स को तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन you would be shocked, 70% of the class 3 and class 4 employees of the government, they don't even get a single day of training after joining service. कोई उनको नहीं बताता है कि सॉफ्ट स्किल क्या होती है, लोगों के साथ बिहेवियर कैसे करना चाहिए, सरकार की सिस्टम कैसे चलती है. टेक द एग्जाम्पल ऑफ ए ड्राइवर और ए स्टेनोग्राफर और ए पियून. वो पियून को कोई ट्रेनिंग नहीं देता. वो एडमिट होता है सरकार में और 40 ईयर्स में रिटायर हो जाता है, 30-40 ईयर्स में. तो देर इज़ अ सीरियस लैक ऑफ ट्रेनिंग एट द लोअर लेवल, नॉट इन द डोमेन फील्ड, बट ट्रेनिंग ऑफ सॉफ्ट स्किल्स. आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि 2004 में गुजरात सरकार ने एक एम्प्लॉई सेटिस्फेक्शन सर्वे किया, सब एम्प्लॉई का. 3 लाख एम्प्लॉयज़ वोटेड एम्प्लॉई सेटिस्फेक्शन सर्वे. उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि अगर आपको मोटिवेट करना, इफ़ यू वांट टू मोटिवेट यू, तो निम्नलिखित 9 फैक्टर में से कौन सा फैक्टर आप सिलेक्ट करेंगे एज द टॉप मोस्ट, सबसे टॉप पे. तो उसमें 9 फैक्टर्स दिए गए थे. उसमें से एक था कि ज़्यादा सैलरी, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा. दूसरा था बेटर परक्विजाइट्स. तीसरा था ट्रेनिंग. चौथा था गाइडेंस. पांचवा था वर्क एटमॉस्फियर, फिजिकल वर्क कंडीशंस. ये सब 9 फैक्टर्स वे लिस्टेड. एंड व्हाट वाज द टॉप फैक्टर विच वुड हैव कम इन द सर्वे अकॉर्डिंग टू यू? मोस्ट ऑफ अस वे थिंकिंग कि सबसे बड़े फैक्टर में ये कहेंगे कि ज़्यादा सैलरी दो, ज़्यादा तनख्वाह दो तो अच्छा मोटिवेशन होगा. ऐसा नहीं हुआ. यू वुड बी सरप्राइज, 25% of the people gave number 1 position to guidance. They say we want guidance in the government. There is nobody to guide us. There is no supervisor to tell us how to do better, what to do, how to do, why to do. कोई है ही नहीं गाइडेंस देने वाला. एक बार ऑफिस में आ गए, दफ्तर में आ गए तो काम करके निकल जाते हैं, गाइडेंस नहीं है. द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब 25% gave this as number 1 rank. 15% gave
number one rank to training. They said we want more training. Only 9% people gave first rank to monetary incentive, कि हमें और तनख्वाह चाहिए और सैलरी चाहिए. बहुत कम लोगों ने ये ऑप्ट किया. तो ये दिखा रहा है कि सिर्फ पे कमीशन अपना सैलरी बढ़ाता रहे सरकार के एम्प्लॉई की, उससे गुड गवर्नेंस नहीं आने वाला है. वन हैज़ टू हैव मासिव ट्रेनिंग ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, तभी जाके ये सिचुएशन को हम बदल सकते हैं. नाउ व्हाट आर द स्ट्रेटजीज फॉर गुड गवर्नेंस? 9 points आई एम गोइंग टू गिव फॉर स्ट्रेटजीज फॉर गुड गवर्नेंस. सबसे पहला कि जितने भी गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट है, उनको एक अपना रीथिंकिंग अपने डिपार्टमेंट के बारे में, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अस्तित्व के बारे में करना चाहिए. फंडामेंटल रीथिंकिंग. उनको ये सोचना चाहिए कि क्या ये एक्टिविटी जो ये ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, इज इट रिक्वायर्ड इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट, नंबर वन. इफ एट ऑल इट इज रिक्वायर्ड, सरकार को ही करना जरूरी है एक्टिविटी या प्राइवेट वाले से करवा सकते हैं आउटसोर्सिंग करके. ये दूसरा पॉइंट. तीसरा, इवन इफ it is required, can we think of doing it more efficiently? Can we have a vision statement, goal statement? Can we have monitorable targets for each one of this? Can we have service satisfaction standards for customers or the citizens? ये सब पुनः विचार हर ऑर्गेनाइजेशन को करना चाहिए, क्योंकि सरकार में एक बार एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया तो फिर बंद नहीं होता. एक बार शुरू कर दिया फिर बंद करना मुश्किल होता है. लोग भूल जाते हैं कि ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम पे क्रिएट किया था स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और पर्पस तो पूरा हो गया, ऑर्गेनाइजेशन चलते रहते हैं. सो दिस इज हाउ वी हैव टू रीथिंक ऑन ऑल दिस. सेकंड स्ट्रेटेजी ये है कि अभी प्रॉब्लम यह है कि जो डिपार्टमेंट पॉलिसी बना रहा है वही डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंट भी करता है, वही डिपार्टमेंट प्रोग्राम का इवेल्युएशन भी करता है. तीनों चीज़ एक ही डिपार्टमेंट करता है. तो उससे क्या है कि देयर इज ए कंप्लीट कन्फ्यूजन बिटवीन द रोल ऑफ स्टीयरिंग एंड रोइंग. स्टीयरिंग इज ए डिफरेंट एक्टिविटी, रोइंग इटसेल्फ इज ए डिफरेंट एक्टिविटी. Policy making has to be separated from implementation, and it has to be separated from the evaluation process. अगर तीनों एक ही मिनिस्ट्री करेगी तो क्या होगा? इस कॉन्टेक्स्ट में यूके गवर्नमेंट ने मैगी थैचर के टाइम पे एक बड़ा ज़बरदस्त ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म करके सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को बहुत छोटा बना दिया. वो बहुत सारा काम है वो अलग एजेंसी बना के उनको दिया गया. इट इज़ कॉल्ड ए प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग नेक्स्ट स्टेप एजेंसीज. तो उस तरह का एक प्रोसेस होना चाहिए. नेक्स्ट स्टेप एजेंसी क्रिएट करना तो इजी है, हमारे यहाँ भी कॉरपोरेटाइजेशन हैज बीन ट्राइड, लेकिन कॉरपोरेशंस अलग काम के लिए बनने के बाद उसकी अकाउंटेबिलिटी के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता. वो ध्यान देना जरूरी है. नेक्स्ट इज क्रिएटिंग कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द परफॉर्मेंस. वी हैव टू हैव ए परफेक्ट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम एंड द प्रमोशन सिस्टम. अभी की जो सरकारी तंत्र की जो प्रमोशन पॉलिसी है, इट इज़ मोर मेरिट कम सीनियोरिटी. इट इज़ कॉल्ड मेरिट कम सीनियोरिटी, बट इट हैज़ टर्न्ड आउट टू बी ओनली सीनियोरिटी बेस्ड प्रमोशन सिस्टम, क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन द इवेल्युएशन डन इन योर एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट. तो जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है, इट इज़ डन ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10, एंड मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, it is a wrong thing on the part of supervisory officers to give 9 to everyone, but most of them end up getting 8 to 10. उसमें क्या होता है कि फिर there is no incentive for a hard working officer, a meritorious officer to get out of turn promotion, because all of them are eligible for promotion, so the seniority based हो जाएगा. तो इसके लिए कुछ पुनः विचार करने की ज़रूरत है. We need to have some kind of a not only 360-degree appraisal, but also some kind of a interview process
for people to be promoted. जैसे यूनिवर्सिटी है एक, there is one more university I am associated with is पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी. उस यूनिवर्सिटी में हमारा जो सिस्टम है कि असिस्टेंट प्रोफेसर से अगर एसोसिएट प्रोफेसर की प्रमोशन का कोई सिस्टम ही नहीं है. Assistant professor will remain assistant professor unless he is selected by a procedure of interview for the associate professor, and similarly from associate professor to professor. So when there is a post of, suppose I am an assistant professor of psychology और एक associate professor of psychology की जगह होती है, even if I have done 10 years as assistant professor, I am not automatically eligible for promotion. There will be an advertisement in the newspaper. Anybody from outside will apply for the post of an associate professor. And then if I can also apply as an internal candidate, and there will be external candidates also. I have to face competition. If they find that I am better than the external candidate, they will take me as associate professor. Otherwise, I can quit and go to some other university and join as associate professor. So this is the real system. हम लोग क्यों ऐसा नहीं कर सकते सरकार में? We can say that joint secretary and above, everything is by open interview only. किसी को सीनियरिटी के हिसाब से प्रमोशन नहीं मिलेगा. कोई एक ऐसी व्यवस्था खड़ी की जाए जिसके माध्यम से देयर इज ए स्क्रीनिंग डन ऑफ ऑफिसर्स. मैं तो ये समझता हूँ, आई डोंट नो वेदर संजीव विल एग्री, कि अगर किसी आईएएस अफसर ने कुछ काम किया है अच्छा और 1 घंटे का इंटरव्यू अगर इंटेलिजेंट पैनल के सामने दिया जाए तो तुरंत आ जाएगा कि इस बंदे ने कुछ किया है कि नहीं किया है. तुरंत निकल आएगा 1 घंटे में कि इज ए स्पार्क इन हिज आइज और नॉट. वो पता चल जाएगा. एंड देन वी सिलेक्ट हिम फॉर द पोस्ट ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबाउ. आई एम श्योर मेनी ऑफ माई कलीग्स विल नॉट एग्री. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रपोजिशन, बट स्टिल आई एम जस्ट सजेस्टिंग. कस्टमर्स हैव टू बी गिवन द ड्राइवर सीट. कस्टमर के बारे में तो कोई नहीं चिंता करता. अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट इज ऑब्सेस्ड विथ इट्स ओन इंटरनल मैकेनिज्म रादर देन कस्टमर्स. एम्प्लॉइज़ का इंटरेस्ट तो सबसे सर्वोपरि होता है. वी लुक आफ्टर आवर ओन इंटरेस्ट वेरी वेल. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, इट बिकम्स ए गवर्नमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज़ फॉर द एम्प्लॉइज़ बाय द एम्प्लॉइज़. ऐसा भी हो जाता है कभी कभी. बट वी हैव टू पुट कस्टमर इन द ड्राइवर्स सीट. वी हैव टू टेक कंटिन्यूअस कस्टमर फीडबैक एंड वेर एवर पॉसिबल गिव कस्टमर्स ए चॉइस. हम सरकारी हॉस्पिटल या स्कूल बना के वाई डू वी फोर्स द चिल्ड्रन टू कम टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट स्कूल्स ओनली. एक कैलकुलेशन हमने किया था गुजरात में. दिस वाज व्हेन आई वाज एजुकेशन सेक्रेटरी 2008. म्यूनिसिपल स्कूल ऑफ अहमदाबाद में जो बच्चे पढ़ते हैं उसमें एवरेज कॉस्ट ऑफ ए स्टूडेंट बीइंग एजुकेटेड इन ए प्राइमरी स्कूल ऑफ अहमदाबाद इन गवर्नमेंट स्कूल came to 11,000 rupees at that time, 2008 में. अभी अगर आप गिनेंगे तो कम से कम 25-30 हज़ार रुपया होगा. एवरेज कॉस्ट, टीचर सैलरी, मेंटेनेंस, एवरीथिंग इंक्लूडेड. तो एक बच्चे का अगर 25,000 रुपया हम स्पेंड कर रहे हैं और क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है तो वाई डोंट वी गिव सिटीजन से चॉइस कि हम आपको 25,000 रुपये के स्कूल वाउचर देते हैं, आप कोई भी स्कूल में पढ़ा लो. खैर इसके भी चैलेंजेस है क्योंकि कंट्रोलिंग द कॉस्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, हैविंग लॉट ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स कॉम्पीट विद ईच अदर, ये सब जरूरी है. लेकिन हो सकता है. देयर इज अ गुड एग्जांपल ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम वेयर वी आर सेइंग दैट ओके यू गो टू एनी हॉस्पिटल यू लाइक, एम्पेनल हॉस्पिटल, प्राइवेट और पब्लिक, टेक द सर्विसेज एंड वी विल पे द बिल अप टू 5 लाख रुपीज़. गरीब लोगों के लिए आयुष्मान भारत स्कीम है. Government foots the bill. So there is a wide variety of choice available for health services among the poor people now. So that kind of a giving choice in the hands of people will help good governance instead of forcing poor quality of services on the people. The organizations also have to be empowered properly. The employees have to be empowered. Communities have to be empowered in order to bring about good governance. We also have to change the organizational culture. क्योंकि सरकार की ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है वो बिल्कुल अलग टाइप की है. इट्स मोर हायरार्किकल, लेस
informal, it's more rigid and less informal. We can all try to make it very, very informal. एक दूसरे को सब लोग फर्स्ट नेम से बुलाए, एंजॉय करते करते काम करे, टीम वर्क करे. Instead of sitting in my room and pressing a bell, asking the peon to come and pick up my file to be given to the next fellow, if I walk out of my room, go to the desk, give him the file, ask him how are you, तो कितना अच्छा रहेगा. इस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर हमको डेवलप करनी चाहिए सरकार में, तभी थोड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा. वी एज टॉप ऑफिसर्स आर क्वाइट इंसुलेटेड, टू बी वेरी फ्रैंक. क्या लोग नीचे के कर रहे हैं कुछ पता ही नहीं है. जापानीज कॉन्सेप्ट है काइजेन. काइजेन का एक कॉन्सेप्ट है. काइजेन में बहुत सारी चीज़ें, उसमें से एक चीज़ ये भी है कि गोइंग टू द एक्चुअल प्लेस ऑफ वर्क, जहाँ काम हो रहा है वो नीचे के टेबल तक जाके देखो, उनसे बात करो, तब जाके इम्प्रूवमेंट होगा. बहुत ज़रूरी है. वी ऑल्सो नीड टू नो who our colleagues are. Most people at the top level, they are obsessed with their bosses rather than their subordinates. They take care of their bosses more than their subordinates, which is bad. We have to mix up among our lower level employees, create a good culture of knowing each other, helping each other, complimenting each other. हम जानते ही नहीं हैं. एक उदाहरण दूंगा जो मेरा एक्सपीरियंस था मोदी जी के बारे में. जब मैं उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी था गुजरात में, तो एक बार ऐसा हुआ कि उनके साथ फाइल वर्क हो रहा था. फाइल वर्क के बाद फिर पूरा हो गया तो मैं निकलने की तैयारी कर रहा था. तब उन्होंने बेल प्रेस किया और एक पियून आया, फाइल उठाया. फाइल का बंडल जो था वो उठा के ले गया. जैसे ही वो पियून बाहर गया, मोदी जी ने मुझे पूछा कि हसमुख भाई, इनको आप जानते हैं, ये बंदा जो अभी आया था. सो आई सेड नो सर, आई डोंट नो हिम. तो क्या बता रहे हैं मुझे कि देखो इसका नाम प्रताप है. ये प्रताप है ना, उसकी क्या एक खास क्वालिटी आपको पता है? मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं पता. तो बोले ये बहुत अच्छा हैंड राइटिंग करता है. उससे कभी अगर आपको लिखवाने का काम करना है, इनविटेशन कार्ड वगैरह, तो आप इनसे लीजिए, बहुत अच्छा हैंड राइटिंग करता है. आई वाज शॉक्ड. इट वाज ए न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी कि कोई आदमी जो कि चीफ मिनिस्टर की सीट पर बैठा है, वो अपने पियून के बारे में समझे, सोचे और उसका प्रेज किसी दूसरे के पास करे. इट वाज अनयूजुअल एक्सपीरियंस फॉर मी. टिल देन I had never cared to know even the names of my peons. Let me tell you, I was so ashamed. तो इसी को आगे बढ़ाना चाहिए. इसी को, इस तरह की कल्चर को अगर आगे बढ़ाएंगे तब जाके ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रूवमेंट होगा. ट्रेनिंग का मैंने जिक्र किया. बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत है. एक चीज़ मैं बताऊंगा कि ट्रेनिंग के बाद भी मोटिवेशन के फैक्टर बहुत कम रहते हैं सरकार में. देयर आर वेरी फ्यू फैक्टर्स टू मोटिवेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, क्योंकि उनका सैलरी फिक्स्ड है, पे कमीशन बढ़ाता रहता है, मेरिट बेस्ड प्रमोशन कम है. तो फिर क्या मोटिवेशन होगा? दूसरा कि ऊपर वाले किसी को अटेंशन फॉर डिटेल भी नहीं है. जैसे कुछ काम आया ऊपर से, मैं बड़ा सीनियर ऑफिसर हूँ, मेरे पास ऊपर से काम आया, तो मैं वो काम मेरे जो 2 एफिशिएंट ऑफिसर है उसी को दे दूंगा और वो किसी और से करवा लेंगे एफिशिएंट ऑफिसर से. देन आई डोंट बोदर कि किसने काम किया, किसने कितना अफोर्ड किया. मैं आई डोंट इवन बोदर. और जो बंदा रियली नीचे बैठा है और एक्चुअल काम कर रहा है उसको तो मैं जानता भी नहीं हूँ. तो मोटिवेशन के बहुत कम फैक्टर है सरकार में, क्योंकि इतना हार्डवर्क करने के बावजूद भी लोगों को कोई स्पेशल रिकॉग्निशन नहीं है, स्पेशल पे नहीं है. तो मैं समझता हूँ एक ही टेक्निक इसमें काम करेगी, और वो है कि सब एम्प्लॉई को हमारी जो एंशिएंट फिलोसॉफी में कर्मयोग का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बताया जाए.
एंशिएंट फिलोसफी में कर्मयोग का क्या मतलब है? कर्मयोग का ये मतलब है कि हर आदमी को अपना काम एफिशिएंटली करना चाहिए, with lot of attention, focus, and without carelessness, and without selfishness, and without ego. This is the short definition of Karma Yoga. Karma Yoga definition is doing one's work without carelessness, without selfishness, and without ego. इसी को कर्म योग कहते हैं। और हमें ये सिखाना पड़ेगा कि देखो, अगर कर्म आप योग की तरह करोगे, कर्म अगर आप योग की तरह करोगे, तो शायद आपका बॉस जो है वो आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, लेकिन वो पुण्य कर्म जो कर्म योग जनरेट करेगा वो ऊपर रजिस्टर होगा, और वो पुण्य कर्म जो है वो दूसरे माध्यम से आपको सुख के रूप में मिल जाएगा। बिकॉज हैप्पीनेस इज नॉट अवेलेबल टू एनीबडी। हैप्पीनेस इज नॉट डायरेक्ट लिंकेज ऑफ वेल्थ और प्रमोशन और पोजीशन। Happiness is experienced by people when there is a punya karma in your account. And if you want to build punya karma in your account, you have to do your work as yoga so that you don't have to do separate punya karma. जो काम है उसी को योग के रूप में करने से पुण्य कर्म जनरेट हो जाएगा, उसी से फिर सुख मिलता है। तो जितने भी सिंसियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स है जिन्होंने कभी परवाह नहीं की है क्रेडिट पाने की या पोजीशन पाने की, वो सबको सुख तो जरूर मिला है भगवान की कृपा से। यही कॉन्सेप्ट से शायद मोटिवेशन आ सकता है सरकार में, ऐसा मेरा मानना है। शॉर्ट टेन्योर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉई इज़ ए वेल नोन फिनोमिनन, ऑल ऑफ यू नो। उसके लिए कुछ प्रावधान करना चाहिए मिनिमम, जैसे भारत सरकार में है कि कोई ऑफिसर अगर स्टेट से जाता है तो 5 साल तक भारत सरकार में काम कर सकता है शांति से। उसी तरह का स्टेट लेवल में भी कुछ होना चाहिए, मिनिमम टेन्योर का कुछ पोजीशन होना चाहिए। देयर इज ऑल्सो ए सजेशन कि एक इंडिपेंडेंट बोर्ड हो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए, जो डिसाइड करे कि मेरिट के आधार पे किसका पोस्टिंग कहाँ होगा, बट वो काम नहीं करेगा। बिकॉज अल्टीमेटली ए पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी हैज़ टू बी देयर। एक डिबेट हमारे यहाँ चलता है कि who is more responsible for this state of affairs, politician or a bureaucrat? And the bureaucrats will try to pass the buck by saying कि no, political interference or politician. But I don't think so. The accountability of a political person is far greater compared to a bureaucrat. A bureaucrat has got a secure job. Under constitution, he cannot be removed without proper procedure. While politician has to go to people every 5 years and he has to get re-elected, otherwise he's out. So the accountability of political system is far greater in a democracy. And so I would think that we are more responsible as bureaucrats to improve the state of affairs. कोई भी bureaucrat अगर अपने suppose एक हेल्थ सेक्रेटरी है कोई स्टेट में, वो अगर अपने स्टेट के प्राइमरी हेल्थ सेंटर की हालत सुधारना चाहता है तो कौन सा पॉलिटिशियन बीच में आएगा? जब एक हेल्थ सेक्रेटरी अपने डिपार्टमेंट की बजट की फाइल भेजता है मिनिस्टर को, उसको लगता है कि नहीं इस तरह से बजट स्पेंड होना चाहिए, लेट मी मेक दिस काइंड ऑफ प्रपोजल, तो मंत्री 1 मिनट में साइन करके वापस भेज देगा। वो क्यों रखेगा उसको इंटरेस्ट नहीं है उसमें। बट ब्यूरोक्रेसी कैन प्ले ए रोल। वी कैन अप्लाई आवर माइंड एंड सी टू इट कि every penny is wisely used. So there is a greater accountability of political system, and so I would like to take ownership. I would like to sort of take the onus of not doing anything on me rather than putting it on the political. I was lucky enough to work in a state where there is hardly any political interference. So is Maharashtra, so is many other states. I don't know about the other states. But at least I haven't faced any example of any political interference in my life. I always felt I had all the liberty to do whatever I wanted to do, but the time was too short for me, and one can do much more than this. तो ये संभव है करना. I would think that, as I told you, the
system of open selection at the top level. And there also my suggestion is that at least 20% of the positions of Joint Secretary and above should be reserved for lateral entry by outsiders. That will bring in a lot of competition. Because कभी-कभी bureaucracy में complacency आ जाती है. IAS में आने के बाद या civil service में आने के बाद complacency आ जाता है. तो complacency दूर हो जाएगी. He will have to keep performing. He will have to show the results. He will have to prepare a good report card if he has to go up in hierarchy. And so not only there should be a selection procedure, independent selection procedure after Joint Secretary, but also 20% of the positions should be reserved for lateral entry. These are some of my suggestions. I don't think I'll take more time than this. Thank you very much. I'll be happy to reply to questions whenever it comes to question and answer. One last point. Although I've described the state of bureaucratic functioning, but I would like to say that there are many, many government officers and employees I have seen in the system who are putting in extremely hard work. In fact, it is because of the efforts of these 20%, 30% hardworking bureaucrats that the system is working very well. But what we need to do is to improve the remaining 70%. उनके पास से भी अगर काम लेंगे, अगर 30% लोगों के काम करने से इतनी अच्छी गुड गवर्नेंस है, तो बाकी के 70% में से अगर 10% भी इम्प्रूव हो जाए, तो वी कैन डू अ लॉट. बट जो एम्प्लॉइज और जो ऑफिसर्स अच्छे से काम कर रहे, I would like to acknowledge their role. There are very many officers who are like that. And I really appreciate them. And we should try to encourage them. And we should try to encourage many others also to join this kind of set of officers. With this, I thank the university for calling me for this class, and my compliments to all of you. Thank you. Thank you.